MCQs number 201. Dash are visual frameworks to help the learner make connections between concepts. Option B. Graphic organizers are visual frameworks to help the learner make connections between concepts. Concepts के among या concepts के between जो connection बनाने के लिए visual frameworks होते हैं वो कौन से हैं? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो हैं वो विजुअल फ्रेमवर्क्स हैं जो हेल्प करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए कंसेप्ट्स के दरमियान. 202. According to Socrates, physical objects and events are dash of their ideal form. सुकरात के मुताबिक जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हैं वो क्या हैं? शेडोज ऑफ देयर फॉर्म. वो अपनी क्या हैं? शेडोज ऑफ देयर आइडियल फॉर्म. अपनी आइडियल फॉर्म के शेडोज होते हैं. MCQ number 203. When the topic or an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use lecture method. MCQ number 204. In your view, which one is most important factor of teaching process? आपके ख्याल से टीचिंग प्रोसेस का अहम जो फैक्टर है वो कौन सा है? तो वो टीचर जो है टीचिंग प्रोसेस में बहुत अहमियत रखता है. MCQ 205. In order to make memory level of teaching a success, what should a teacher do? मेमोरी लेवल टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? Logical sequence should be there in the presentation of the subject matter. Recall the rehearsal of the learned material should be done at short intervals. Subject matter should be meaningful and interesting before presenting it to pupils. All of these are correct. All these should be done by a teacher. MCQ 206. Which from the following should be used to increase character responses and appropriate behavior? Praise. Option A. 207. Responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation. More likely. MCQs 208. Jean Piaget proposed dash stages of cognitive development. जीन पियागेट ने कितनी स्टेजेस जो है प्रपोज की थी कोग्निटिव डेवलपमेंट में? तो वो 4 स्टेजेस थी. MCQs 209. All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of the empires depends upon the education of youth. This is the saying. ये किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था कि जो किसी भी एम्पायर की जो बेहतरी है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके यूथ की एजुकेशन पे डिपेंड करती है. MCQs 20210. The concept of pragmatism educational philosophy says that education should be about life and growth. MCQs 211. According to Plato, the highest goal in all of education is knowledge of the dash, knowledge of the good. According to Plato, there are dash laws of it. Connectionism के 3 law हैं. Which of the following can affect the results of students in the examination? तो number of teacher parents meetings जो हैं, number of class works and homework given, working hours and days of the school, ये सारी चीज़ें जो है results को affect कर सकती हैं. How shall you help a student who has failed in the half yearly examination? जो half yearly examination में fail हुआ student उसको कैसे help करेंगे? By reteaching the difficult concept. उन्हें difficult concept दोबारा से पढ़ाकर. The phrase equal educational opportunities in Pakistan means equal opportunities for all children to have access to education. 216. Conferences may occur between students, teacher and students, parents and teachers. All of these are correct. Meetings or conferences can be held among them. During facilitative questioning, the teacher poses open-ended questions during facilitative questioning. Dash is a form of discussion that starts with individual response. If the students then formulate students pairs, then the pairs are used to form groups of 4 in discussion web. Discussion web में ये सारा काम होता है.
219. When a learner is studying simply because work is assigned by the teacher, he is doing cognitive memorizing. Cognitive memorizing. राउंड टेबल डिस्कशन इन्वॉल्व्स डैश पार्टिसिपेंट्स. राउंड टेबल डिस्कशन में 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं. 221 MCQs. Dash is a pair activity in which students have a short period, typically 30 seconds, to share all they know by writing in a graphic organizing. This is called quick write. Quick write. Dash is an instrument that is an instructional approach in which the objectives are presented to learners beginning with the unknown concepts and proceeding to known concepts, unknown to unknown, unknown to known. 223. According to the law of effect, if a stimulus results in a negative outcome, the SR bond is weakened. अगर कोई stimulus जो है वो नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव आउटकम देता है तो वो वीकर है, उसका जो एस आर बॉन्ड है वो वीकर है. स्टिमुलाई रेस्पॉन्स बॉन्ड जिसे कहते हैं एस आर बॉन्ड, वो वीकन होगा. द ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर. द ब्रेन श्रिंक्स. दिमाग जो है वो छोटा होता जाता है, ये वो कम काम करता है जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है. 225. An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students a course grade is called summative assessment. At the end of course is done summative assessment. 226. Dialectic or dialectical method is a discourse between opposing parties to establish the truth through reasoned arguments. reasoned arguments के थ्रू जो है truth establish करना dialectic method है टू पार्टीज के दरमियान या अपोजिंग पार्टीज के दरमियान. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज ए सेट ऑफ डैश लर्निंग डोमेन्स. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन्स कितनी है? 3 है. 228. टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग. एनालाइजिंग ऑप्शन ए. 229. वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट. जो वैलिडिटी है किसी असेसमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी रेलिवेंस पे डिपेंड करती है. 230. रोसो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी. प्लेटो बिलीव दैट द टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. प्लेटो के मुताबिक जो है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली. वो कहता है कि जेनेटिकली ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, प्लेटो कहता है. 232. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का. 233. वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द वे एज वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन और एवरेज मार्क्स जो है एक ही तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. द डैश इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड्स आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. Who advocated removing children from their mother's care and raising them as a words of the state? Plato. Words of the state. Plato ने ये कहा था. 236. In a case of spending money, the virtue is dash between wastefulness and stinginess, generosity. 237. According to John Dewey, children should experience dash in school to make them better citizens. Children should experience democracy. 238. The law of effect can be effectively used in classroom management. Law of effect can be used in classroom management. The situation technique of classroom management is a technique where instead of punishing negative behaviors, the teacher might decide to actually dash the negative behavior. Teacher encourage करता है इस टेक्निक में नेगेटिव बिहेवियर को बजाय उसके कि उसको सजा दे. 240. A successful teacher's most important function is to develop the thinking abilities among children. 241. A posteriori knowledge is knowledge that is known by experience. Posteriori knowledge है वो experience से पता चलता है. The book A Brief History of Time is written by Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग ने जो है ये बुक लिखी है और स्टीफन हॉकिंग जो है ये यूके से बिलोंग करते हैं. According to the law of effect, if a stimulus results in a positive outcome, the SR bond is strengthened. मतलब वो
एसआर बॉन्ड या स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर जो है वो किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जा रहा है। 244 according to the dash SR bonds are stronger if an individual is ready to learn law of readiness. 245 for an effective teaching the teacher must be a subject matter expert includes 1 2 and 3 all these command over the subject, the ability to convey knowledge, the ability to apply ideas from one discipline to another। ये सारी चीज़ें जो है काबिल टीचर की पहचान। देर इज़ डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट्स ओल्डर, देर इज़ डिग्रेडेशन, जैसे एज बढ़ती है उस तरह जो है मेमोरी जो है वर्किंग मेमोरी वो स्लो होती जाती है या कम होती जाती है, कम होती जाती है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन जो है फॉर्मल असेसमेंट नहीं है। इसमें जो इंटरव्यू हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, क्विजेज हैं, ये सारी फॉर्मल असेसमेंट की टाइप्स हैं। 248 what was the relation between Plato and Aristotle? Aristotle was the student of Plato। Aristotle जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। The cognitive domain involves knowledge। cognitive domain के अंदर क्या आता है? knowledge आता है। MCQs नंबर 250 है हमारा। The good reading aims at developing understanding। good reading किस चीज़ पे फोकस्ड होती है? वो अंडरस्टैंडिंग पे होती है।